Facts about TRV, Temporary Residence Visa for Canada. Hi guys, my name is Rohit Menon, former visa officer, New Zealand High Commission. I am the director of EduConnect International Private Limited, which is also branded as Visas Connect. We operate by the name of the brand called Visas Connect. So very important topic today, which has basically come up on public demand, which is TRV Application Canada, the facts about TRV Application Canada. So not many people know what TRV application is in Canada, especially those who are studying in Canada, those who are on a work permit in Canada, and those who are staying in Canada on a temporary residence visa and extend their visas on a timely basis when they are in Canada. So I will keep the conversation of this video in English and in Hindi so that I can reach out to a lot of people who understand both the languages, right? So TRV application is basically something which you require when you leave Canada and if you have to enter back to Canada for your regular schooling or your education, or you are going back to work. A lot many people within Canada, they don't know that they need a TRV application, TRV visa label on their passport in order to come back to their, come back to the country, which is Canada. काफ़ी लोगों को लगता है कि मेरा वीज़ा जो स्टडी परमिट है वो वैलिड है 2025 तक या 2026 तक या 2027 तक वैलिड है और वो ऐसे ही कनाडा छोड़ देते हैं. यू कैन लीव कनाडा while you still have your active permit, study permit, work permit, or any type of visa that you have. You can leave Canada, but in order to come back to Canada, you need to have a visa label, right? So जब आपका वीजा एक्सपायर हो जाता है, जब आपका परमिट एक्सपायर हो जाता है, you apply for your study permit extension or you apply for your work permit extension, जो हार्ड कॉपी आपको मेल बॉक्स पे आपके एड्रेस पे आ जाती है, राइट? तो उसके बेसिस पे यू कंटिन्यू वर्किंग एंड यू स्टे. बट लेट्स से अगर आपको हॉलीडेज में इंडिया आना है, कोई फंक्शन में या कोई मेडिकल रीजन की वजह से अगर कुछ टाइम के लिए 15-20 दिनों के लिए इंडिया आना पड़े, उसके लिए आप कनाडा छोड़ तो सकते हो, लेकिन कनाडा में वापस आने के लिए टू रिज्यूम योर स्टडीज और टू रिज्यूम योर एजुकेशन और योर जॉब, यू हैव टू हैव द TRV लेबल. काफ़ी सारे लोग हैं जो TRV लेबल के बारे में जानते ही नहीं है, वो अप्लाई नहीं करते हैं और इंडिया आ जाते हैं और जब वापस जाने की कोशिश करते हैं तो उनको एयरपोर्ट पे रोक दिया जाता है ये बोल के कि आपके पास वैलिड वर्क परमिट तो है, वैलिड स्टडी परमिट तो है, बट यू डोंट हैव अ वीज़ा लेबल. अ वेरी रिसेंट इंसिडेंट, 2-3 एप्लीकेशंस को मुझे कॉल आई थी थ्रू रेफरेंसेस फ्रॉम माई स्टूडेंट्स जो वहाँ ऑलरेडी हैं, जो वर्क परमिट एप्लीकेशन जिनका हम लोग TRV कर चुके हैं, उनके कोई फ्रेंड्स फंस गए थे. दे वर प्लानिंग टू बोर्ड द एयरक्राफ्ट in India to come back to Canada after their small holiday in India, and on the airport they were stopped and they were sent back home saying कि आपके पास TRV नहीं है, you can't go to, or you can't board this flight or you can't enter Canada. So what you need to know and understand is TRV application बहुत बहुत ज़रूरी है. अगर आप कनाडा छोड़ने वाले हैं तो छोड़ने से पहले make sure you are getting or applying for your TRV visa. ये आप कर सकते हैं कि आप अगर आप 1-1.5 महीने 2 महीने लंबे टाइम के लिए इंडिया आ रहे हैं या अपनी होम कंट्री में जा रहे हैं लॉन्ग लीव के लिए, तो TRV की एप्लीकेशन लगा के आप आ जाओ, क्योंकि उसका अप्रूवल जो होता है वो एज ए PPR होता है, पासपोर्ट रिक्वेस्ट होता है. तो जब आप इंडिया में हो तो आप पासपोर्ट रिक्वेस्ट डाल के यू कैन गेट योर पासपोर्ट एंडोर्स्ड विद द वीज़ा लेबल हियर इन इंडिया ऑल्सो. और अगर आप कनाडा में हैं तो उसका प्रोसेस थोड़ा अलग होता है. आपको ऑनलप में अपना पासपोर्ट डाल के आपको ब्रांच में भेजना पड़ता है वहाँ की इमिग्रेशन में, और वो आपको लेबल लगा के उसी ऑनलप में आपको पासपोर्ट वापस भेज देते हैं. तो वो अलग अलग प्रोसेस हैं विद इन कैनेडा एंड आउटसाइड कैनेडा के. बट मेक श्योर व्हेन यू आर लीविंग कैनेडा फॉर अ शॉर्ट हॉलीडे टू योर होम कंट्री, you have a valid TRV label along with your study permit or your work permit or whatever permit you have handy with you. I hope this information was useful. Guys, this is a very, very typical issue which a lot of students, lot of migrants within Canada faces.
So I would suggest and I would request you all to share it with your friends who are studying there, जिनका वीजा एक्सपायर होने वाला है, जिनका टीआरवी नहीं है, जिनका परमिट आ गया है लेकिन टीआरवी के बारे में कोई आइडिया नहीं है. So, and if you want any help in your TRV application from within Canada, we do it online. We get you online, we take you online, we submit the application in front of you online. It's a very, very crystal clear process that we follow when we are submitting our client's application. So you can always contact us on the given numbers on WhatsApp or through a call. Thank you so much for watching the video. Please share and